Hello learner, आज our topic is parametric function. Earlier we learned about explicit and implicit function. In explicit and implicit function में हमारे पास दो variables, one is dependent, another is independent variables को हम relate करते हैं. And but in parametric functions we have a third parameter. Third हमारे पास एक variable होता है that related with variable x and y, that related with variable x and y. Let us discuss. So let us suppose हमारे पास y is equal to fx. This is y is equal to fx. अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन होता है तो इट इज कॉल्ड explicit function. This is our explicit function. And so now in parametric function में हमारे पास these two variable x and y related with some another variables. So let us suppose x is equal to gt. तो यहाँ पे x is a function of the parameter third variables t, and similarly y मेरे पास relate कर रहा है t के साथ y is equal to ht. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, थर्ड वेरिएबल की एंट्री यहाँ पे कर दिया, दैट थर्ड वेरिएबल्स रिलेट विद y एंड x. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, x और y के बीच में वी गॉट ए रिलेशन. दैट रिलेशन इज satisfied by the third variable, that is t. t यहाँ पे t is known as the parameter. t को कहा जाता है पैरामीटर. t is called the parameter. Now तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेट अस डू. अगर हमको क्या निकालना, dy अपॉन dx निकालनी है, तो वी विल यूज बाय द चेन रूल. हियर dy upon dx, but our y is a function of t. तो y हमारे पास t का फंक्शन है. So y is a function of t, dy upon dt into, तो dt upon dx करेंगे by the chain rule, dt upon dx, because both y and x are the variable of new parameter, that is t. तो इस तरह से हमने by using the chain rule का हमने इस्तेमाल किया. तो चेन रूल, तो we need dy upon dx. we have to find out dy upon dx हमको निकालनी है. तो क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा rearrangement कर देते हैं, dy upon dt in the numerator, and this terms goes, dx upon dt goes in the denominator. तो ये हमारे पास this will be our formula, and dy upon dt is h dash t. तो first derivative of h and dx upon dt will be g dash t. तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, subject to the condition that g dash t in the denominator, this should not be 0. इसको 0 नहीं होना है, अगर 0 हो जाएगा तो it will be not defined. So under this exercise 5.6 of NCERT text, so we do पहला क्वेश्चन हम करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, for the all question we need to find out the differentiation of y with respect to of x. The first question हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first, if x is twice a t square, x is a function of t by this relation, and y is a function of t also a t raised to the power 4. ये हमारा फंक्शन है. तो we will have to find out dy upon dx one by one. पहले हम क्या करेंगे, dx upon dt dy upon dt फाइंड आउट करते हैं. dx upon t डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ट्वाइस है, मेरे पास कांस्टेंट है 2t स्क्वायर का, मेरे पास 2t हो जाता है. सिमिलरली dy upon dt विल बी a t की पावर 4 का हो जाता है a t की पावर 3. अंडर द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, t की पावर n. सो व्हेनेवर यू डिफरेंशिएट ए फंक्शन विद द सेम वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हमारे पास आता है n t raised to the power n minus 1. दिस इज the formula we have used here. So now finally the ratio of these two variable dy upon dx. So dy upon dt by this formula, dy upon dt divided by dx upon dt.
The value of dy upon dt is this one, 4a t raised to the power 3 divided by dx upon dt, which is 2 into 2, 2 into 2, 480. 480. तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मेरा आंसर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 2. So there is a parameter theta x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. Here theta is the parameter and b sin theta, this is b sin theta. First of all, differentiate dx upon d theta. Now cos theta का differentiation minus sin a sin theta and dy upon dt will have the dy upon d theta will have sin का cos हो जाता है. So this is our very simple. Now the formula is dy upon dx will be dy upon d theta divided by dx upon d theta. Putting the value of dy upon theta, which is b cos theta divided by minus a sin theta. So this expression minus b upon a and cos by sin will be tan theta. So this is the question number 2 with this formula. This is the basic formula of this expression. Now this question number 3, we have to find out dy upon dx, derivative of y with respect to of x. So here first find the value of dx upon dt, differentiate this x with respect time, which is cos t, and dy upon dt it will be minus अब यहाँ पे हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ कॉस का हो जाता है माइनस साइन 2t इंटू, नाउ डिफरेंशिएट ऑफ 2t का डिफरेंशिएशन हो जाता है जस्ट डिफरेंशिएट ऑफ d अपॉन dt. अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो ये दिस वन. सो नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम माइनस साइन 2t एंड 2 ओनली t का 1 हो जाता है, 2 इंटू 1. तो फाइनली द वैल्यू बिकम्स, so dy upon dx will be dy upon dt and dx upon dt. Now put the value of dy upon dt, this is dy upon dt, तो 2 आगे ले लेते हैं, minus 2 sin 2t and divided by dx upon dt which is cos t. थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ sin 2t हमारे पास cos t आएगा, तो दैट विल बी minus 2 and sin 2t, 2 sin t into cos t. So because तोड़ने का मकसद था कि ये cos t हमारा कैंसिल हो जाता. फाइनली दिस बिकम minus 4 sin t. This is the minus 4 sin tt. So this is the value and this is the derivative of the given parametric function. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव x is equal to 40 and y is also a function of the parameter t, 4 upon t. So now here again dx upon dt will be, and here 40 t का 1 differentiation, dy upon dt is equal to 4 d upon dt 1 by t will be t की पावर minus 1. So now this हो जाता है मेरे पास minus 1 as the basic formula, minus n after simplification minus 4 t square. So now finally dy upon dx will be dy upon dt divided by dx upon dt. Now this is a dy upon dt is minus 40 minus 4 t की पावर minus 1.
t raised to the -2 and divided by dx upon dt which is 4. तो ये सॉल्व करके मेरे पास -4 t raised to the -2 and it also written as तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. So now this value become question number 4. Now question number 5 question number 5 आते हैं. Very simple. And in question number 5 x is equal to, here t is a parameter. T is a parameter. Cos t minus cos theta minus cos 2 theta, and the y variables related with the parameter t is sin theta. This is a sin theta minus sin 2 theta. This is the variable y with the relation with the theta. तो सेम ही हम निकाल लेते हैं यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा फर्स्ट, dx अपॉन डी थीटा. सो कॉस का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा, एंड एज यूजुअल कॉस यहाँ पे दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन मेड ऑफ कॉस अनदर 2 थीटा. कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास साइन 2 थीटा, एंड इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है ओनली 2. यस, सेम वे dy upon d theta will be differentiation of dy upon d theta will be sin has cos theta, and this is a composite function of 2 theta. sin and 2 theta का composite है, sin का cos हो जाता है cos 2 theta into 2 theta. differentiation will be only 2 into 1. So now finally putting these values in this formula, dy upon dx, dy upon d theta divided by dx अपॉन डी थीटा. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. नाउ देखते हैं क्या आता है वैल्यू dy अपॉन डी थीटा. दिस वन, दिस द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा cos थीटा, एंड दिस इज -2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस साइन माइनस प्लस एंड 2 आगे ले लेते हैं 2 साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो एज इट इज़ हम रख सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से नो टर्म्स इज कॉमन, नो फैक्टर इज कॉमन. सो दैट्स व्हाई दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. Now in this question again theta as a parameter, theta is a parameter. So now first calculate करेंगे dx upon d theta, and ये theta का 1 हो जाता है हमारे पास, and sin has a differentiation cos theta. Same way dy upon d theta will be a times of 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड cos का मेरे पास sin थीटा हो जाता है. नाउ दिस वैल्यू बिकम्स -a, जस्ट मल्टीप्लाइड इट, -a sin थीटा. सो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला dy upon dx required to find dy upon d theta over dx upon d theta. If I put dy upon d theta, this is a -a sin theta, -a sin theta over dx upon theta, which is this one, a times of 1 minus cos theta. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा. इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज देयर आर सम टर्म्स, सम फैक्टर विच इज़ कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. वो कैसे देखते हैं, साइन को अगर ब्रेक करूँगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा. बट हियर एंगल थीटा मेरे पास है, तो इसको ब्रेक जब करेंगे तो एंगल का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 ओवर एंड 1. हमें cos थीटा को ऐसे तोड़ना है
यूजिंग द फॉर्मूला सो दैट वन कैंसिल आउट। तो उसके लिए एक ही तरीका मेरे पास ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो हियर इज एंगल थीटा, तो यहाँ पे सब एंगल आ जाएगा थीटा बाई 2। यस, जस्ट सिंप्लीफाइड दिस बिकम्स माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ओवर, तो ये if you open the bracket तो 1 minus 1 in place 1 minus 1 plus 2 sin square theta divided by 2, ये cancel out हो गया, and finally minus 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ओवर हमारे पास आ जाता है 2 sin square theta 2 sin square theta by 2, ये है। और सिंप्लीफाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पावर ऑफ साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली विच रिमेन्स आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन टर्म इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये मेरे पास आ जाता है कॉस बाई साइन, इट बिकम माइनस कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। इस तरह से हमने वाई और एक्स को रिलेट किया विद द हेल्प ऑफ द पैरामीटर। ना क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6-7। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव x is equal to, here x is equal to sin साइन की पावर x is equal to sin cube t and over square root of cos 2t, and y is equal to cos cube t over square root of cos 2t, तो यहाँ पे t एज ए पैरामीटर हमारे पास है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको यूजिंग द क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt, क्वेश्चन रूल होता है हमारे पास u अपॉन दीज आर द टू फंक्शन, दियर डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड u डैश इंटू v माइनस u, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अवर डिनोमिनेटर इज दिस वन, डिनोमिनेटर, and here this is a square of this one, square of cos 2 theta, square of cos 2t, yes sir, denominator differentiate of the numerator, in the numerator we have sin cube t minus numerator and differentiate of the denominator. Now what is the value now, cos q square root of cos 2t into, अब यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले साइन टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाता है, 3 साइन टी की पावर 3 माइनस 2 इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस टी, यस साइन टी का डिफरेंस कॉस टी एंड साइन टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन दिस टर्म्स। नेक्स्ट वन, तो यहाँ दिस द वैल्यू साइन क्यूब टी एंड नाउ cos 2t की पावर हाफ है, तो उसका हो जाता है सिंपली हाफ cos 2t की पावर हाफ माइनस 1 इंटू cos 2t का हो गया मेरे पास माइनस साइन 2t
इंटू 2t का डिफरेंशिएशन हो जाता है सिंपली 2. सो दिस इज द वैल्यू इन द न्यूमरेटर over our denominator, over the denominator. This is a square root of this one, cos 2t का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली स्क्वायर रूट हट जाएगा, cos 2t आ जाएगा. चलिए देखते हैं थोड़ा सा सम सिंप्लीफिकेशन. देयर इज एनी टर्म इज कॉमन और नॉट. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आएगा अगर इसको ब्रेक कर दें हम लोग. इफ आई ब्रेक cos 2t को ब्रेक कर दे 2 sin t cos t, then sin t cos t will be taken out. So now the value becomes here cos 2t square root of cos 2t into 3 times of this 3 sin t की पावर 2 into cos t, and here minus into minus is plus. ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, this will be plus, and cos 2t की पावर हाफ minus 1, cos 2t half minus 1 will be minus half into sin 2t को तोड़ देते हैं, this sin 2t become 2 sin t into cos t. तो ये हमारे पास हो जाता है नाउ ओवर cos 2t. तो cos 2t को डिनोमिनेटर पे ले आएंगे. नेक्स्ट टर्म वी हैव therefore this value dx upon dt is equal to this goes in the denominator 1 by this, taken the LCM, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली cos 2t into 3 times of sin square t, sin square t into cos t, एंड इसको लिख लेंगे हम लोग 2 sin t cos t प्लस 2 sin t into cos t डिवाइडेड बाई रूट cos 2t की पावर cos 2t की पावर माइनस हाफ. दिस गोज इन द डिनोमिनेटर cos 2t एंड ओवर, चलिए इसके नीचे भी 1 ले सकते हो आप, डिवाइडेड बाई cos 2t. नॉट टेकन द एलसीएम, तो ये यहाँ चला जाएगा, दिस गोज इन द न्यूमरेटर के साथ. तो रूट cos 2t एंड रूट cos 2t विल बी सिंपली cos 2t इंटू 3 टाइम्स ऑफ sin square t into cos t, and this is 2 times to sin t into cos t divided by तो ये ऑलरेडी cos 2t ऑलरेडी था एंड अनदर ये मेरे पास आ जाता है. नाउ व्हाट इज कॉमन, कुछ चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं या हम ऐसे छोड़ सकते हैं. नाउ द टेकन कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, sin t cos t टेकन आउट, sin t इंटू cos t बाहर निकाल सकते हैं. इनसाइड ऑफ दिस विल बी 3 टाइम्स sin t cos 2t. तो एक पावर आ चुका है मेरे पास 3 sin t cos 2t, यहाँ पर रहेगा 3 sin t cos 2t रिमेन हियर एंड प्लस यहाँ पे ओनली 2 बचेगा मेरे पास. यस, नाउ फाइनली ओवर द डिनोमिनेटर पर हमारे पास हाँ cos 2t की पावर हो गया मेरे पास 3/2, 1 पहले से था 1/2 दिस वन.
Now this is the value of dx upon dt. Now next हम तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. Now differentiate of this y with respect to t, dy upon dt. Using this formula, denominator cos 2t, differentiate of numerator d upon dt into cos t की power 3 minus numerator that is numerator cos cube t, differentiate of denominator d upon dt, our denominator cos 2t की power half, cos 2t raised to the power 1 by 2 divided by square of this term, square of cos 2t. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. नाउ let us do it. How to differentiate cos 2t into cos t की पावर, ये दिस इज द कंपोजिट फंक्शन. cos t की पावर 3 का हमारे पास हो जाता है. पहले पावर का करेंगे 3 टाइम्स ऑफ cos t, 3 minus 1 इंटू cos t का हो जाता है माइनस साइन t. नाउ नेक्स्ट टर्म cos क्यूब t, दिस इज द cos क्यूब t एंड पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे. इन पावर वी हैव 1 by 2, तो पावर ऑफ cos 2t, पावर ऑफ cos 2t रेज टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ cos विल बी माइनस साइन 2t and differentiation of 2t will be just 2. Differentiation of 2t will be just 2. Now over root of this will be only cos 2t. So over cos 2t, थोड़ा सा taken some simplification. So here minus 3 sin t, minus 3 sin t, minus 3 times of sin t into cos square t, cos t की पावर 2 एंड इसके पावर मेरे पास है इंटू रूट cos 2t, इंटू रूट cos 2t एंड यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस sin 2t. दिस इज sin 2t, sin 2t को हम तोड़ सकते हैं इसको. नेक्स्ट sin 2t we will do later into cos cube t into cos 2t की पावर माइनस हाफ. इसको लिख लेंगे हम लोग कुछ ऐसे, cos 2t because half minus 1 is equal to minus 1 by 2 divided by cos 2t, divided by cos 2t. तो now this is the cos 2t. अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज अनदर टर्म, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, टेकन द एलसीएम. तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टेक द एलसीएम ऑफ 1 ऑन दिस, तो ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ, जिससे स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली इट बिकम्स minus 3 sin t and into cos square t into cos square t into cos square t हो जाता है एंड दिस इंटू दिस मेरे पास cos 2t आ जाएगा. फाइनली square root of this one and square root of this one cos 2t, remaining term will be this one sin 2t into cos cube t. तो sin 2t को हम तोड़ सकते हैं 2 sin t cos t. sin 2t को तोड़ेंगे, we will do next step sin 2 theta, sin 2t into cos cube t ओवर cos 2t एंड उसके साथ ये भी आज हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t
into cos 2t. So now अगर sin 2t को 2 sin cos रखेंगे then something is common in the numerator. तो final value we will have here dy upon dx is equal to -3, पहला टर्म से ऐसे ही रहेगा मेरे पास, -3 sin t cos क्यूब t, -3 sin t into cos क्यूब t, cos square t into cos 2t into cos 2t एंड प्लस हो गया हमारे पास, दिस इज प्लस, एंड साइन 2t को स्प्लिट कर देंगे, 2 sin t cos t, 2 sin t into cos t into cos क्यूब t into cos क्यूब t. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है. ओवर द डिनोमिनेटर its value is cos 2t into cos 2t. तो ये मेरे पास आ जाता है इन द दिस पार्ट. सम पॉइंट इज टेकन आउट, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से. sin t cos t is taken out. If I take sin t into cos t बाहर आ गया एंड अंदर हमारे पास हो जाता है -3, इसमें से cos बाहर आ जाएगा, -3 cos t cos 2t, -3 cos t into cos 2t and plus sin already taken, cos already taken, only 2 times cos क्यूब t हमारे पास बचेगा यहाँ पे, 2 times cos क्यूब t, bracket close over the denominator cos 2t into square root of cos 2t. So now this is the final value of dy upon dx. This is the dy upon dt. So this is dy upon dt and this is our dx upon dt. दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो we will be able to find out dy upon dx. Now the ratio is तो dx upon dt की value this and dy upon dt has this value. Now final expression is dy upon dx is equal to dy upon dt over dx upon dt is equal to, तो ये dy upon dt की वैल्यू, इससे को हम क्या करेंगे, इस चीज से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिनोमिनेटर बोथ हैव द सेम वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. फाइनली न्यूमरेटर पार्ट इज दिस, इसका sin t into cos t inside of the bracket this term -3 cos t into cos 2t and plus 2 cos cube t and over this term cos 2t into square root of cos 2t. सो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं दिस एक्सप्रेशन से, डिवाइड दिस होल दिस एक्सप्रेशन. सो हमारे पास आ जाते हैं फिर sin t cos t आउटसाइड ऑफ दिस वन, इससे डिवाइड करेंगे sin t into cos t side of the bracket 3 sin t cos 2t, 3 sin t dot cos 2t and this is plus 2 bracket close
ओवर cos 2t रेज टू द पावर 3/2, या सेम थिंग हम रख देंगे यहाँ पे cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, द डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल्ड एंड व्हाट रिमेन हियर एंड ऑल्सो विल बी कैंसिल्ड। फाइनली जो बच जाता है दैट वैल्यू विल बी this term upon this one, minus 3 cos t minus 3 cos t into cos 2t and plus 2 cos cube t, 2 cos cube t over 3 sin t cos 2t plus 2, 3 sin t dot cos 2t and plus 2, this is plus 2, this is the plus 2. Now this is the final value of dy upon dx, derivative of y with respect of x. In this question t is the parameter, we have to find out dy upon dx. So let us do first differentiate x with respect to time. So here cos t का differentiation हो गया minus sin t and ये तीन फंक्शन मेरे पास है, पहला log है 10 है एंड t/2, log का डिफरेंशिएशन हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x है द डिफरेंशिएशन 1/x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हो जाता है sec square x, 10x विल हैव sec square x। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट log है द डिफरेंशिएशन 1 tangent x/2 t/2 into 10 का डिफरेंशिएशन, दिस इज a composite function, tangent है द डिफरेंशिएशन sec square t, एंगल यहाँ पर t/2 ही रहेगा, into t/2 का डिफरेंशिएशन हमारे पास, द डिफरेंशिएशन ऑफ t/2 विल बी 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाइड, इट रिक्वायर्ड सम सिंप्लीफिकेशन। साइन टी को ब्रेकअप कर देते हैं, -2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, तो 10 t/2 को थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे, इट कम साइन अपॉन कॉस, कॉस t/2 पर आ जाएगा मेरे पास cos t/2 divided by sin t/2 and here sec square t/2 will be 1/2 is here 2 times cos square t/2, t/2 is the angle and this is the bracket is closed. Required some simplification, a times minus 2 sin t/2 into cos t/2 एंड कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी यहाँ पे, एक ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म विल बिकम प्लस 1/2 sin t/2 into cos t/2. So this is the numerical part. So now coaches there is no terms is common, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, सेम वे इट रिटर्न साइन माइनस साइन टी एंड प्लस डिनोमिनेटर पर दिस टर्म 2 sin cos will be sin t and next 1/sin will be cosec t, so this become a minus sin t plus 1/sin will be cosec t, cosec t। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ
dy upon dt here, dy upon dt सिंगल टर्म मेरे पास है, साइन का कॉस हो जाता है, a cos t. Now the dy upon dx will have dy upon dt divided by dx upon dt. So what dy upon dt is a cos t, a cos t divided by dx upon dt, this term a times minus sin t plus cosec t plus cosec t, a cancel out हो गया. What remains will be the derivative of y with respect of x, cos t minus sin t and plus this is the cosec t. So this is the answer. Now theta is the parameter. Now dx upon dt, dx upon d theta, sec theta, differentiation of sec theta will be sec theta into tan theta, and the differentiation of tan will be sec square theta. Now finally dy upon d theta is equal to dy upon d theta divided by dx upon d theta. Now dy upon dx, put the value of dy upon d theta, it is b sec square theta divided by a sec theta into cos tan theta. एक चीज कटेगा मेरे पास. Now what remain here, b sec theta divided by a tan theta, a tan theta. थोड़ा सा correction required here. b cosec will be b divided by cos theta and sin will be a into sin theta divided by cos theta. ये cancel out हो गया. Now finally it becomes b divided by a sin theta, b over a sin theta. Now next question, question number 10. Question number 10, we have the variable x is equal to, the variable x is equal to a times of cos theta plus theta into sin theta, and our y variables, y is a function of theta, a times sin theta minus theta times cos theta के dx upon theta will be a. So here differentiation cos theta will be minus sin theta, and here this term is a product of two functions, anyone taken as first function, this is second function, and using this formula u dot v, differentiation of this one first function, differentiate second plus differentiate first, this is formula we are using here. Theta first function, differentiate of second, that is sin theta का हो गया cos theta, plus differentiate of first function will be 1 and second term is sin theta. So now here dy upon d theta will be a times sin theta differentiation of cos theta, here is again इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, दिस इज सेकंड टर्म. तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड plus differentiation of first function is 1 into the second function. So this is the product rule.
bracket is closed. Now here thoda sa simplified required this cos theta, and here open the bracket, minus minus plus theta times sin theta, minus into plus is minus cos theta. The bracket is closed. Now finally value, now dy upon dx will be dy upon dx dy upon d theta over dx upon d theta. If I put the value of dy upon d theta, this one, no value is common here, so we have a times of cos theta plus theta into sin theta minus cos theta के bracket close over dy upon d theta, here dy upon d theta over dx upon d theta, this value, it is a minus sin theta here plus theta into cos theta, and the remaining term is sin theta. कोई भी चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट दिस वन, कैंसिल आउट हो गया. नाउ रिमेनिंग टर्म विल बी अवर आंसर. So final answer of this question is cos theta plus theta into sin theta minus cos theta over the term minus sin theta plus theta into cos theta plus sin theta. This is our final derivative of y with respect to of x. So now in this question, find dy upon dx. So here t is a parameter. Differentiate x with respect to time. So here this is a composite function. First we have to do power of 1 by 2. Power of 1 by 2. Power of 1 by 2 will be, its power is half. Its differentiation is equal to half bracket sin की power 40 and its power is half minus 1 into differentiation of here sin की power 40. Now next differentiation we do differentiation d upon dx a की power x will be a की power x into log a base a. तो ये हम करेंगे यहाँ पे log a base a. Now differentiation of a raised to the power here, a raised to the power sin की power 40 into log of a to the base c. नेक्स्ट हम मेरे पास हो जाता है sin t की पावर 4. sin t की पावर 4 हो गया मेरे पास. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में कर लेंगे. वी डू इट दिस sin t की पावर 4. Now simplification of this will be half minus 1 will be root 1 upon 2. This term goes in the denominators. a sin की पावर 40 की पावर हो गया हाफ माइनस प्लस 1 आ जाएगा इंटू a रेज टू द पावर साइन की पावर 40 इंटू लॉग ए बेस ए एंड साइन t की पावर 4 का हो जाता है 4 साइन t की पावर 3 इंटू साइन t का डिफरेंशिएशन विल बी द कॉस t. If any requirements of simplification is, yes,
तो हियर इज तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन. नाउ नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट ऑफ दिस वन लाइकली dy अपॉन dt. डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज ए पावर का हम करेंगे. इट्स ए पावर कॉस के पावर 4t की पावर हाफ. तो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी हाफ आगे आ जाएगा एंड ए की पावर कॉस की पावर टी की पावर हाफ माइनस 1 इंटू ए की पावर का. नाउ ए की पावर का डिफरेंशिएशन हो गया ए की पावर कॉस की पावर 40 इंटू log of a to the base e into differentiation of cos की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे. वी डू नेक्स्ट स्टेप d अपॉन dt cos की पावर t की पावर 4. just simplified this one. its power is half minus 1 goes in the denominator. 1 upon 2 times square root of a cos की पावर 40 into remaining term a raised to the power cos की पावर 40 into log of a and differentiation is 4 cos t की पावर 4 minus 1 is 3 and cos t into cos t का डिफरेंस minus sin t आ जाता है. so now this is the differentiation of dy upon dt. now finally आते हैं we have to find dy upon dx. dy upon dx will be dy upon dt over dx upon dt. now dy upon dx over, now this divided by this term. now what it comes 4 आगे ले लेते हैं. 4 minus 4 log is are inside outside of this one minus 4 log a cos cube t cos t की पावर 3 into a की पावर this a की पावर cos t divided by its power is divided by this. इसको भी ऊपर ही ले आते हैं. if I take in the numerator it comes out and 2 से ये cancel कर देते. we have to cancel this 2, this becomes 2 and its power is 1 by 2. now power हो गया मेरे पास it's a 1 minus half. ऑलरेडी इसकी पावर 1 थी एंड नीचे वाला की पावर लेके आए तो इट बिकम्स हाफ. नाउ डिवाइडेड बाय dx अपॉन, so this is the value of dx upon dt. dx upon dt. so here again cancel out this. so 2 log a sin cube t and cos t sin की पावर 3 into cos t एंड लास्ट में बच गया ये. इट्स पावर इज 1 है नीचे है हाफ तो 1 माइनस हाफ कर लेंगे हम. 1 माइनस हाफ. सो नेक्स्ट टर्म इज a की पावर साइन की पावर t की पावर हो गया 1 माइनस हाफ. दिस इज 1 माइनस हाफ. नाउ इज इक्वल टू क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास
and also कुछ चीज छूट गया हमारे पास, ये साइन थीटा रिमेन हियर आल्सो, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या क्या चीज बच गया मेरे पास, एक साइन से कैंसिल होगा, एक कॉस से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर बचेगा, cos square term would remain here, one cos is cancelled, cos square t, cos t का t की power 2, cos t की power 2, and this is the root of this, root of a की power a raised to the power cos की power 4 into t multiplied sin t हमारा कैंसिल हो गया, yes, this is the final one, and in the denominator we have sin square t, sin square t and cos t cancelled, remain here, root of this one only, a sin की power 4t. So now what will becomes, this is the value, cos t upon sin t will be cot square t, this is cot theta का whole square and into, and this term is again y upon x into y upon x. So this is the final answer we have.